on the posterior aspect of the axilla, right? And it is present between the muscles which are coming from the lateral border of the scapula, the tragus muscle, and the humerus, right? So there are three intermuscular spaces. और पर्पस क्या है थ्री? बेटा ये अपने माइक को ऑफ कर दे जिसके जिनके माइक में डिस्टॉर्शन है, कर लिए अपने माइक ऑफ कर दे जिनके माइक में डिस्टॉर्शन है. Okay, so these three intermuscular spaces, इनका पर्पस क्या है जी? These three intermuscular spaces, these are basically responsible for the passage of the certain structures which are originating in the anterior aspect, or rather there is getting origin in the axilla, and they will leave the axilla and passes posteriorly. ठीक है, ये जो spaces हैं इसमें जो भी structures pass कर रहे हैं वो सारे से कहाँ originate करते हैं? Axilla में originate करते हैं, anteriorly. ठीक है ना? और these structures have to leave the axilla and comes to either on the posterior aspect to perform the different functions, right? So these three spaces are there. Number one is the quadrangular space. Here can you see this space, the four-sided space that is called as the quadrangular space. So this space, the quadrangular space, is defined as the space through which the two structures, the axillary nerve and the posterior circumflex humeral vessels, they passes backwards and winds around the surgical neck of the humerus. हमने पढ़ा था ना जी कि axillary nerve and the posterior circumflex humeral vessel. जब we were talking about the surgical neck of humerus. हमने कहा था ना कि दो structures को wind around करते हैं. Yes, sir. Right. So these two structures, they are basically coming from the axilla, and they will leave the axilla through this space, the quadrangular space, and then they will pass posteriorly and they will wind around the surgical neck of the humerus. ठीक है जी, कोई problem तो नहीं है. And now you can see this is present between the humerus and the triceps basically right here. So it is also called as the humerotracepital foramen. ठीक है, humerotracepital foramen. ठीक है, उसमें से कौन से दो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं बच्चे? इसमें से दो स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं. Axial nerve or posterior circumflex humeral Here you vessel. can see the axillary nerve, right, and the posterior circumflex humerus, जो कि anterior aspect से आ रहे हैं, and they are coming backwards. They are coming posteriorly through this space and winds around the surgical neck of the humerus. ठीक है जी. सर फोरामिना का नाम रिपीट कर दें. जी बेटे humerotracepital. ठीक है, this quadrangular space is also called as a humerotracepital. Okay, now what are these boundaries? Superiorly it is bounded by the teres minor. ठीक है जी, teres minor, and inferiorly by the teres major, right, and medially by the, this is a lateral border of the triceps muscle. ठीक है, this is the triceps, long head of the triceps. So it is a lateral border of the long head of the triceps muscle and laterally by the surgical neck of the humerus. You can see this one. The four boundaries of the quadrangular space is important viva question जी. What is the quadrangular space? What are its boundaries and what are its contents? ठीक है जी, मैं बता रहा हूँ, फिर आप कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन नहीं पता चला आपने क्या क्वेश्चन किया, राइट? तो द क्वाड्रेंगुलर स्पेस के इसकी बाउंड्रीज क्या हैं? हाउ मेनी बाउंड्रीज? इसको तो फोर बाउंड्रीज, स्पीयरली बाउंडेड बाय द टीरियस माइनर. अच्छा, सम बुक्स ने ये भी लिखा है कि क्योंकि इस टीरियस माइनर के आगे से subscapularis ventrally गुजर है. Some books, some writers or anatomists, they believe that a subscapularis is also forming the boundary, the superior boundary, right? So, and the right subscapularis and the teres minor, they are going to form the superior boundary of the quadrangular space. ठीक है? So far you can just remember about teres minor, right? So teres minor and inferiorly teres major, medially the lateral border of the long head of the triceps muscle and laterally by the surgical neck of the humerus. And the contents are two axillary nerve and the posterior circumflex humeral vessels. ठीक है बेटा, की प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लें. Anybody? Okay. Laterally क्या बताया आपने? Laterally बेटे ये मैंने बताया नहीं, surgical neck of humerus. You see this one. ये laterally surgical neck of the humerus. ठीक है जी, surgical neck of the humerus. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा क्लियर आ जाएगा. ये देखते हैं, teres minor, teres major, triceps और ये surgical neck of the humerus. ये दो स्ट्रक्चर यहाँ से निकलने हैं. These are the axillary nerve and the posterior circumflex humeral vessels. ठीक है जी, clear? Okay, now we'll talk about the other space that is called as this one, the upper triangular space. ठीक है जी, upper triangular space. बेटे जिनके माइक में डिस्टॉर्शन है प्लीज अपना माइक बंद कर दें.
upper triangular space. The upper triangular space, it is bounded superiorly by the teres minor, inferiorly by the teres major, and laterally by the, you see, this one, the medial border of the long head of the tragus muscle, right? This medial, this triangular space is also named as the upper triangular space is named as the medial triangular space, right? And it is also called as the omotricipitale. ठीक है ना? I told you the word omo means shoulder. ठीक है? So this is present between the shoulder muscles, the scapular muscles over there. ठीक है ना? And over here, that one is a triceps. So that's what is called as the omotricipitale. ठीक है जी? प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? ओके, इसकी बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी. द बाउंड्रीज आर द teres minor, superiorly, inferiorly teres major, and that laterally by the long head of the tragus, or the medial border of the long head of the tragus muscle. And उसके contents क्या हैं जी बेटे? इसमें से एक nerve pass, vessel pass करेगी, that is the circumflex scapular vessels or artery. ठीक है? Circumflex scapular बेटे is basically a branch of the, here you can see the artery is coming out from the anterior aspect, ठीक है? It's coming out from the this upper triangular space and comes to dorsally. Or dorsally आने के बाद it is going to take part in the anastomosis, as you can see. So this circumflex scapular artery, this one, right? It's a branch of the subscapular artery. Subscapular artery is a branch of the third part of the axillary artery. ठीक है? ये anterior aspect से आ रही है ना? So ये axillary artery is going to give this branch, subscapular artery. Or subscapular artery जो है ना, along this, you know, lateral border over of the scapula gives this branch which winds around and passes through this upper triangular space, and then it comes along the dorsal aspect of the scapula. You see this dotted line. These dotted lines represents the dorsal aspect, the artery coming from the anterior aspect and running on the dorsal aspect of the scapula, right? And here it is going to make anastomosis around the scapula. ठीक है? तो आपकी जो circumflex scapular artery है, it is a branch of the subscapular artery which is going to take part in the anastomosis around the scapula. ठीक है जी? Anastomosis around the scapula में you must be remembering the circumflex scapular artery, and then the two branches are coming from the thyrocervical trunk of the subclavian artery. ठीक है ना? So this is also a question. Okay, what name the vessels which are going to take part in the formation of the anastomosis around the scapula? So anastomosis around the scapula, it is formed by the suprascapular artery. बच्चे, you can see this one, the suprascapular artery. याद है suprascapular artery मैंने बताया था कहाँ से पास करती है जी? Anybody can tell me the suprascapular artery passing through the supraclavicular fossa, suprascapular notch बच्चे. ठीक है? superior border scapula में बताया ना, superior border of the scapula, it is going to have a notch in this region along at the root of the coracoid process. ठीक है ना? यहाँ पे सब नॉच होती है, तो उसमें से ये सॉरी उसके बाद उसके ऊपर से ये सुपरस्कैपुलर आर्टरी पास कर रही है. ठीक है? और नॉच के अंदर से क्या चीज पास करती है जी? सुपरस्कैपुलर नॉच या फोरामेन से कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है? सुपरस्कैपुलर नर्व पास करती है. मैंने आपको बताया था ना कि दिस वन स्ट्रक्चर इज पासिंग अंडर द नॉच एंड वन इज पासिंग अबव द नॉच. सो दिस इज सुपरस्कैपुलर आर्टरी कमिंग अबव. ठीक है जी? सुपरस्कैपुलर आर्टरी, then the circumscapular artery, and then the deep branch of the transverse cervical artery. It is also called as the dorsal scapular artery. ठीक है जी? So this dorsal scapular artery is the deep branch of the transverse cervical artery and the suprascapular artery and the circumflex scapular artery. But just remember, I repeat it again, anastomosis around the scapula. Anastomosis around the scapula, it is formed by the three vessels. Number one, the circumflex scapular artery, जो अभी हमने पढ़ी है, जो कि triangular interval से पास कर रही है. ठीक है? Sorry, medial triangular space से pass कर रही है, right? So the circumscapular artery. Number two, the suprascapular artery, which is a branch of the thyrocervical trunk of the subclavian artery. ये subclavian artery बेटा, इसका ये trunk आ रहा है thyrocervical trunk. यहाँ से दो arteries originate करेंगी, the suprascapular artery and the superficial cervical artery or the transverse cervical artery. ठीक है ना? The transverse cervical artery is giving another branch, the dorsal scapular artery, which runs along the medial border, and it is going to take part in the anastomosis around the scapula. ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे?
कोई सर प्रॉब्लम? ये नॉच वाला पॉइंट रिपीट कर दें सिर्फ, कि नॉच के पास से कौन सी जा रही है और इंफीरियर कौन सी जा रही है, नर्व कौन सी जा रही ये बेटे आपको जब स्केपुला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था। ओके, आई विल टेक दिस क्वेश्चन इन द एंड, ठीक है? आप मुझे याद करवाना, ठीक है? इस वक्त जो है आप टॉपिक को कवर कर है? लें ओके वो, सर। ठीक है? तो एनास्टोमोसिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपर ट्रायंगुलर स्पेस में कोई प्रॉब्लम है जी? अपर ट्रायंगुलर स्पेस, दिस वन, the upper triangular space, it is also called as a medial triangular space, ठीक है ना? इसमें this one is a medial triangular space, right? And it is bounded superiorly by the teres minor, inferiorly by the teres major, and laterally by the long head of the triceps, ठीक है? उसके contents क्या हैं? The circumflex scapular artery, and I told you the circumflex scapular artery, you can see that it is coming from the subscapular artery, the branch of the axillary artery, ठीक है? यहाँ से आ रही है, and then it is going to this branch, and then the circumscapular artery getting origin in the axilla, ठीक है ना? It's coming in the axilla, right? So axilla से it has to pass on the dorsal aspect of the scapula, so it will pass through the upper triangular space, ठीक है? तो यहाँ से ये upper triangular space से dorsal aspect of scapula पे आ जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगी? It is going to take part in the formation of the anastomosis around the scapula. Is it clear जी? प्रॉब्लम है बच्चे? अपर ट्रायंगुलर स्पेस में कोई प्रॉब्लम है सुफियान? ये बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं, नो सर, ये रिपीट नहीं कर है। रहे हैं सर। कौन कह रहा है रिपीट करते हैं? असद सर, हाँ, असद हूँ सर, असद। असद, असद बेटा कहाँ से आपको समझ नहीं आया? शाबाश। ट्रायंगुलर स्पेस बाउंड्री समझ नहीं है या कंटेंट समझ नहीं आया? शाबाश। सर ये जहाँ से एनास्टोमोसिस हो रही थी। अच्छा, आपको अपर ट्रायंगुलर स्पेस समझ में आ गई है? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसकी बाउंड्रीज में? नहीं सर, बाउंड्री तो आपको था। ठीक है ना? टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड दी लॉन्ग अट्रस। इसका कंटेंट क्या है? सर्कमफ्लेक्स कैपुलर आर्टरी, ठीक है जी? नो, सर्कमफ्लेक्स कैपुलर आर्टरी ब्रांच किसकी है? इट्स अ ब्रांच ऑफ द सबस्कैपुलर आर्टरी। ये सबस्कैपुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी आ रही है बेटा, ठीक है? एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है वहां से ये सबस्कैपुलर आर्टरी आएगी। इट रन्स अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, और यहाँ पे इट इज गोइंग टू गिव दिस ब्रांच, ठीक है? That is a circumflex scapular. Circumflex scapular artery यहाँ से क्या करेगी? इंटरवल के थ्रू इट कम टू लाई ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द स्कैपुला। ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना? These are representing the pathway of the artery on the opposite side, on the back, ठीक है? On the posterior aspect, ठीक है? Anterior aspect भी ये इस तरह नजर आ रही है, और डॉटेड लाइन शोज कि ये posterior aspect पे क्या कर रही है, ठीक है ना? Posterior aspect पे आने के बाद क्या कर रही है? ये anastomosis around the scapula बना रही है। This is an again a viva question. Name the vessels taking part in the formation of this anastomosis around the scapula, ठीक है? तो पहली कौन सी आ गई? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है? दूसरी कौन सी आ गई? सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ऊपर से आ रही है, ठीक है? एंड तीसरी कौन सी आ गई जी? दैट इज द डीप ब्रांच और द डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी। डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। और ये दोनों आर्टरी सुप्रास्कैपुलर ट्रांसवर्स सर्वाइकल कहां से आ रही हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम दिस ट्रंक दैट इज कॉल्ड एज अ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, एंड दिस थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है? क्लियर? हाँ जी असद, असद जी सर। सो गए हो जाग रहे हो? ठीक है बेटा, समझ में आई? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है जी? ओके। नो, सर ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है, इसका नेम आगे जाके चेंज हो जाता है आगे इसका? हाँ बेटे अभी हम आगे पढ़ेंगे ना। ये देखें, ये सबक्लेवियन आर्टरी आ रही है, राइट? एंड दिस इज द फर्स्ट रेब। तो the first at the outer border of the first rib, subclavian artery is named as is continuous as the axillary artery, ठीक है? आर्टरी बेटे continuous pipe है ना, तो we name it according to the regions in which through it is passing, ठीक है? ये subclavian है, ठीक है? That is Okay, just sir. in the neck region, ठीक है ना? जब neck region से आएगी तो इसने axilla में दाखिल होना ना, तो at the outer border the first is a boundary for the axilla, तो यहाँ से it is named as the axillary artery, ठीक है? Clear जी? Okay. Now the Yes, sir. other space is this one. This is the upper or the medial triangular space, and this is the lower or the lateral triangular space, ठीक है? दो triangular space है ना, एक medial है और एक lateral है, right? So this is one. This one is the lower triangular space or the lateral triangular space, and it is also called as the triceps hiatus,
ठीक है, is also named as the triangular interval. ठीक है, अगर आपसे कहता है what is the difference, वाइवा क्वेश्चन, what is difference between the upper triangular space and the triangular interval, तो आप कहेंगे the upper triangular space is a medial triangular space and the triangular interval is a lateral triangular space. Is it clear जी? वाइवा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है. It is also named as the triangular interval, which is also called as the triceps hiatus. ठीक है, hiatus किसे कहते हैं? Opening, ऐसे ही है ना. So it is this opening is present between the two heads of the triceps over here, the long head and the lateral head of the triceps. ठीक है, that's why it is also called as the triceps hiatus. Is it clear? No. What its boundaries? Superiorly we have got this again the teres major muscle. ठीक है, and medially we have got the long head of the triceps, and laterally we have got the little head of the triceps. And some books write that the neck of the humerus. ठीक है जी, ठीक है. Is it clear? Or the humerus, not the neck, rather the humerus. ठीक है जी. Boundaries of the low triangular or the little triangular space or the triceps hiatus or the triceps interval. ठीक है, that is, or the triangular interval, right? So it is bounded superiorly by the teres major, medially by the long head of the triceps, and laterally by the humerus. ठीक है, और इस the part of the humerus यहाँ से कौन सा muscle originate कर रहा है? That is the lateral head of the triceps. Is it clear जी? ठीक है, और ये this space, इस space का purpose क्या है जी? इस स्पेस का पर्पस ये है कि इट इज गोइंग टू कनेक्ट द एक्सिला विद द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म. ठीक है, यहाँ से कौन से स्विच पास करेंगे जो कि आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को सप्लाई करेंगे. एंड दीज आर द रेडियल नर्व एंड द प्रोफुंडा ब्रेकिया वेसल्स. ठीक है, क्लियर जी? ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ द ट्रायंगुलर स्पेस में मैंने को बताया है, द कंटेंट्स आर द रेडियल नर्व एंड द प्रोफुंडा ब्रेकिया वेसल्स. इज इट क्लियर? And this triangular space is going to connect the axilla with the posterior aspect of the arm. So we have finished with this triangular space. Is कोई problem तो नहीं है? Then we move to the next topic. Then clear? Everything is clear जी? हाइटस का नाम अगर रिपीट कर दें. Hiatus बेटे triceps hiatus. ठीक है? That is the सर अपर ट्रायंगुलर स्पेस का क्या आपने सेकंड नेम बताया था? omotricipital. प्रेसिपिटेट. ओके सर. ठीक है जी, omotricipital. ठीक है, triceps hiatus बता दीजिए, triangular interval जिसको कहते हैं लोअर. Okay, now we'll move to the another slide share. So pause कर दें. Okay जी, we are going to talk about the very important structure. That is okay, now we'll talk about the axilla ji. Axilla or the armpit. Should we continue ji? कोई problem तो नहीं है ना spaces में? करें सर. Okay, now the axilla. Axilla is also called as the armpit, or also called as the underarm, also called as the oxter. ठीक है, it is also called as the oxter, and it is defined as a pyramidal shaped space. ठीक है, it's a pyramidal shaped space. ठीक है, present in the between the upper part of the arm and the side of the chest wall. ठीक है जी, it's a pyramidal shaped space. You see, like this one, it has got an apex and a base, and apex is directed upwards, right? So the armpit or the oxter of the axilla, it is a pyramidal shaped space which is present between the upper part of the arm and the side of the chest wall, right? And it is also defined as the area which is lying directly under the joint. ठीक है, directly under the joint, under the shoulder joint, where the upper arm connects with the upper arm is going to connect with this shoulder bone. थोड़ा ऐसे करते हैं. ठीक है, नहीं बेटा, shoulder. ये the shoulder bone ना, ये upper arm is going to make a joint with this shoulder blade, right? So this in a space. Okay, so इसका purpose क्या है जी axilla का? Axilla basically it is responsible for the transmission or the passage of a neurovascular bundle coming from the root of the neck and entering into the upper arm, right?
So it forms an important passage for the nerves and the vessels, ठीक है, as they travel from the root of the neck to the upper arm. You see, is it clear जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शेप मैंने आपको बता दी, इसकी शेप कैसी है? Its shape is pyramidal, four-sided pyramid है, which has got an apex. I not got a जी सॉरी जी बेटे. Okay, so it has got, it's a pyramidal shaped space which is having an apex which is directed upward, base which is directed downwards, and the four sides, the anterior wall, four walls, anterior wall, posterior wall, lateral wall, and the medial wall. ठीक है जी? Is it clear? Okay, now we'll talk about the apex first of all. I told you the apex is directed upwards towards the root of the neck. ठीक है जी? And it is bounded anteriorly by the clavicle. You can see anteriorly the apex is bounded by the clavicle, posteriorly by the, you can see this border, the superior border of the scapula. ठीक है ना, ये इसके पीछे छुप गया ना clavicle नीचे. You can see this one here. So posteriorly bounded by the superior, bounded by the superior border of the scapula, and medially it is bounded by the outer border of the first rib. You see, this is the first rib. So this is the outer border of the first rib. So apex has got three boundaries. Apex is bounded anteriorly by the clavicle, posteriorly by the superior border of the scapula, and medially by the outer border of the first rib. The problem to nahi hai beta. We'll talk about this base. I told you the base, it is a broader one and it is directed downwards, right? And it is bounded by the anterior, it is bounded by the, you see, this is a base, right? So anterior, it is bounded by the anterior. ये क्या जी? What is this? pectoralis major. पेक्टोरलिस मेजर का जो लोअर बॉर्डर है, ये क्या बताता है यहाँ पे एक्सिला में? एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड. ठीक है जी? Fold. ठीक है, एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड फॉर्म बाय द पेक्टोरलिस मेजर, एंड देन दिस इज वन पोस्टीरियरली बाय द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड. ठीक है, एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड इज फॉर्म बाय द टेंडन ऑफ द लैटिसमस डॉर्सी व्हेन इट वाइंड्स अराउंड द टीरिस मेजर. हमने पढ़ा था ना जी लास्ट टाइम. ठीक है, सो द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, राइट? प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे. और मीडियल इसके क्या पढ़ा हुआ है? द चेस्ट वॉल. ठीक है, बेस की बात कर रहा हूँ. Anterior axillary fold, posterior axillary fold, and the chest wall. And this area, that is, you know, the base is completed by the skin, which is extends between the anterior and the posterior wall. ठीक है ना? Armpit की जो skin है, right? It is extending from the anterior border to the posterior border. So base is closed by this skin over here. Is it clear, जी? ठीक है? So the base of the axilla, anteriorly the anterior axillary fold formed by the lower border of the pectoralis major muscle, posteriorly by the posterior axillary fold formed by the latissimus dorsi and the teres major muscle, and then the medially the chest wall, and this area that is covered by the skin, which extends between the anterior and the posterior axillary walls. Right जी? कोई problem तो नहीं है जी? Now we'll talk about the anterior wall of the axilla. The anterior wall of the axilla में कौन से structures आएंगे जी? सबसे पहले हमने पढ़ा anterior axillary fold, that is the pectoralis major over here. और जैसे हम pectoralis major को remove करेंगे तो we will be coming across with this the clavipectoral fascia here. You see the clavipectoral fascia. This is the area of the anterior axillary fold, ना बच्चे, anterior wall of the axilla, right? So pectoralis major हमने यहाँ से काट दिया. So underneath is this is the clavipectoral fascia, the pectoralis minor muscle, and in the upper part here you can see the subclavius muscle, right? So the anterior wall of axilla is formed by the muscles of the pectoral region, right? Or you can say the important structures of the pectoralis. These are the pectoralis major, subclavius, pectoralis minor, and the clavipectoral fascia. The problem to नहीं, simple है very, है ना? Now we'll talk about the posterior wall. Posterior wall is formed by the, you see, subscapularis, from above downwards, subscapularis, latissimus dorsi, and the teres major muscles, right? ठीक है? Is it clear जी? Problem तो नहीं है? Oh, जाग रहे हो, सो रहे हो? Okay. Now, No, sir. okay. Posterior wall ठीक है ना? Posterior wall. अच्छा, उसके बाद we'll talk about the medial wall. And here you can see the medial wall. It is formed by the upper 4 or 5 ribs. ठीक है जी? Medial wall is formed by the upper 4 or 5 ribs. Here you can see.
1, 2, 3, 4, 5. The upper 4 or the 5 ribs, they are going to make the medial wall and ribs and the intercostal spaces in between them. ठीक है ना जी? Chest wall, जब we talk about the chest wall and medial wall, तो हमारे पास क्या है? We have got these, that one, the ribs and then the intercostal spaces also, right? And here on the lateral aspect of the chest wall, यहाँ से एक muscle originate कर रहा था जी, ribs में कौन सा था? कौन बताएगा जी? serratus anterior. Yes, serratus anterior, right? So the serratus anterior covering the chest wall, ठीक है ना? Ribs को और intercostal spaces को जो muscle यहाँ cover कर रहा है, that is the serratus anterior, right? So we have got the medial wall formed by the upper 4 or 5 ribs and the intercostal spaces and the covered by the serratus anterior. Okay, now जी, lateral wall जी, ठीक है? और lateral wall कहाँ पे होगी जी? Lateral wall will be along with the arm, मैं बताया ना, between the upper part of the arm. तो अपर पार्ट ऑफ द आर्म में कौन सी चीज इसके सामने आएगी जी? हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताई थी लेटर वाल आपको जब हम पढ़ रहे थे बाइसेप्टल ग्रूव जी। तो मैंने आपको बताया था द बाइसेप्टल ग्रूव इज इन फॉर्मिंग द नैरो वॉल ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द एक्सेल। याद है आपको जी? सो वेल द लेटरल वॉल इज फॉर्म्ड बाय द, यू कैन सी द टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस। कौन सा मसल आ रहा है जी? दिस वन, टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस से कौन सा मसल आ रहा है बच्चे? Coracobrachialis. Coracobrachialis. Here you can see, right? So the lateral wall is contributed by the coracobrachialis and the bicipital groove में कौन सा tendon run करता है जी? Long head of the biceps muscle, ठीक है? मैं बताया था ना bicipital groove में एक tendon run करता है, जो structure run करते हैं, right? So the long head of the biceps. Is it clear जी? So you can say the coracobrachialis and the biceps muscle is going to form the lateral wall, of course. Okay, now what would be the contents जी? Contents axilla की boundaries में कोई problem तो नहीं है बेटा? किसी को problem है तो भी पूछ लो। Axilla की boundary में apex is got a base and then it is got the anterior wall, posterior wall, medial wall and the lateral wall. कोई problem है इनमें तो बेटा पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है जी? Fine. We'll talk about the contents of the axilla. The contents of the axilla, I told you कि axilla का purpose मैंने क्या बताया था? It's a passage for the neurovascular bundles, for the nerves and the vessels, just living through the root of the neck and entering into the upper limb, right? So contents में सबसे पहले we'll be having the axillary artery and its branches. ठीक है जी? You see the axillary artery and its branches. Axillary vein यहाँ से काट दी है, ठीक है? The axillary vein and its tributaries, ठीक है ना जी? And you remember axillary vein is always lying on the medial aspect of the artery, ठीक है जी? So axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, and then the cords and the branches of the brachial plexus, ठीक है ना बेटे? When we talk about the brachial plexus ना, तो brachial plexus के बेटे 5 parts होते हैं. We divide it into the 5 parts. Number 1, the roots, trunks, devians. Then the roots is going to form the trunks. In trunks, they are going to form the devians, and the devians are going to form the cords. And then the cords are further giving the branches which are going to supply the upper limb, right? So the root से लेके जो devian तक का part है, that is present in the root of the neck, ठीक है? Till the root of the neck, or just below the root of the neck, just in the axilla, we are only dealing with the cords and the branches of the brachial plexus, ठीक है? So contents में क्या आ जाएगा? The cords and the branches of the brachial plexus. Is it clear जी? Hello? Clear. Sure. So contents are the axillary artery and its branches, axillary vein and its tributaries, cords and the roots of the brachial plexus, and then the axillary lymph nodes. As you can see, the axillary lymph nodes, the 5 groups of the axillary lymph nodes over there. We'll talk them in detail. ठीक है जी? So there are 5 groups of the axillary lymph nodes and the lymphatics in the axilla, right? And number 5 क्या होगा जी इसमें? And all these structures, these are embedded in the fat in this region, right? So कोई मुझे बताएगा जी what are the contents of the axilla जी? Axilla के contents बताएं जी. Yes sir, बता दें. Axillary artery, axillary vein and its tributaries, Axillary artery and और its branches,
ठीक है branches, अच्छा ठीक axillary vein in its tributaries, शाबाश और fat, फैट हो गई शाबाश और Divisions और and lymph, curves of axillary lymph nodes, lymph nodes है हाँ शाबाश लिम्फ nerve नोड्स हो गए between और नर्व नर्व में क्या चीज आएगी कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस नहीं मैंने आपको बताया कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्रेकियल प्लेक्सिस मैंने कहा 5 पार्ट्स Sir. होते हैं बेटे ठीक है जो रूट्स हैं रूट्स हेयर ठीक है ट्रंक्स और डिवीजन्स दे आर ऑल वेयर एट द रूट ऑफ द नेक ठीक है और एक्सिला में जो आएंगे ओनली कॉर्ड्स एंड द ब्रांचेस ठीक है क्लियर जी so there are 5 contents number 1 axillary arteries branches number 2 axillary venous tributaries number 3 cords and the roots cords and the branches of the brachial plexus number 4 lymphatics and the lymph nodes and number 5 is a fat ठीक है जी clear okay now we'll talk about the axillary artery axillary artery it is a large artery right it's a large artery which is going to supply the upper limb right एक ये बड़ी आर्टरी बेटा इट इज गोइंग टू सप्लाई द अपर लिंब नंबर 1 नंबर 2 इट इज गोइंग टू सप्लाई द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल ठीक है जी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड आल्सो इट इज गोइंग टू सप्लाई द एक्सिला ठीक है ना स्ट्रक्चर्स इन द एक्सिला क्लियर सो ब्रेकियल आर्टरी axillary artery is a larger artery that is going to supply the blood supply to the lateral side of the chest wall axilla and the whole of the upper limb right so it is the continuation of the subclavian artery ठीक है जी क्या है जी it's a continuation of the subclavian artery right okay now इसका extend ये कहां से कहां तक extend करती है जी it extends from the outer border of the first rib to the lower border of the teres major muscle जी ठीक है जी तो ये teres major का lower border आ रहा है ये ठीक है ना ये जो ये जा रहा है दैट इज व्हाट दैट इज अ लिटमस डॉट्स और इसके नीचे ये दिस इज अ teres major muscle नजर आ रहा है इसके पीछे राइट सो एक्सटेंड क्या है जी नंबर 1 इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ द बोले ना जागे यार एक्सिलरी आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द subclavian artery, राइट एंड इट उसका एक्सटेंड क्या है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब ठीक है up to the lower border of the teres major muscle okay now we can define it like this that the axillary artery it is the continuation of the subclavian artery at the outer border of the first rib ठीक है जी ठीक है it's a continuation of the subclavian artery at the outer border of the first rib and it terminates at the lower border of the teres major muscle and continues downwards as a brachial artery is it clear ji so axillary artery it is a continuation of the subclavian artery at the outer border of the first rib and it terminates right or rather it is continuous below the lower border of the teres major muscle as a brachial artery is it clear okay now this artery throughout its course has an intimate relationship with the brachial artery right it's closely related you can see it is closely related with the brachial plexus rather cords and the branches of the brachial plexus आप देख सकते हैं ठीक है and all these structures the structures which are leaving the root of the neck and entering into the upper limb these are the axillary vein axillary artery and that plexus basically right these are wrapped in a sheet that is called as the axillary sheath हम पढ़ चुके हैं ना axillary sheath मैंने आपको बताया था ठीक है जी प्रॉब्लम तो नहीं है ना what is axillary sheath कोई बताएगा मुझे what is an axillary sheath जी it is the extension of it is the connective tissue sheath beta I told you Prevertebral fascia. vertebral fascia. पढ़ लो ना यार देख के बंदा बता देता है well it is coming from the is the extension of the prevertebral fascia ठीक है जी clear okay now axillary artery it is basically divided into the 3 parts ठीक है and it is divided into 3 parts by this attachment of the pectoralis minor muscle to the कहाँ attachment होती है जो pectoralis minor की कौन बताएगा pectoralis minor is attached to the is inserted to the medial border of the coracoid coracoid process very good right so
This pectoralis major muscle, sorry, pectoralis minor muscle, it is going to divide the axillary artery into the 3 parts, right? The first part of the axillary artery that extends between the outer border of the first rib to the upper border of the pectoralis minor muscle. ठीक है जी? First part क्या है जी? That extends between the outer border of the first rib and the upper border of the pectoralis minor muscle. The second part is a part which lies posterior to the pectoralis minor. This one, the smaller part, right? This part lies posterior to the